to share this with you. Anyone else who is interested, I can share it with you guys as well. ठीक है? So just wanted to let you know guys कि जितना टाइम आप लोग लगाओगे, जितना डिले आप लोग करोगे ना, उतना आप लोगों का ये जो है डिफिकल्ट होता रहेगा इंटरव्यू का प्रोसेस. एंड द डे दे थिंक कि आप लोगों को यहाँ पर आना है, ऑफिस आकर देना है, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू. एंड इफ यू आर रीडिंग देन नथिंग इज डिफिकल्ट. आप इफ यू थिंक कि उतना रिलीजियसली आप लोग पढ़ रहे हो, देन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें. देन वो आपको वहां पर बुला ले, वो खुद आपके घर पे आकर इंटरव्यू ले ले, देन इट डज नॉट मैटर. बट हर एक को अपनी कैपेसिटी हर एक को पता है. आई एम नॉट आस्किंग किसकी क्या क्या कैपेसिटी है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितने डेडिकेशन से पढ़ रहा है. यू नो इट. सो इफ यू थिंक कि नहीं आपको थोड़ा सा पुश लगने वाला है, यू रिक्वायर्ड अ बिट ऑफ पुश, देन प्लीज मेक इट एक्सपेडाइट. थोड़ा सा फास्ट करो इसको, गेट इट डन बिफोर ये दे गेट इट स्ट्रीमलाइन. बहुत इसको एकदम रिलीजियसली फॉलो करने लग जाए. हर कंपनी के रिकॉर्ड होगा, सेशन रिकॉर्ड होगा, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होगी. इससे बेटर है कि आप लोग स्टार्ट कर लो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव ऑलरेडी spent 10 minutes in discussion. So we were on topic of compute. Anyone has any questions related to compute? Yes guys, yes, no, maybe topics which we covered till Friday. Any questions do you have? Okay, and he says no. What about others? Juhi, did you practice? Do you have any questions? Jafar bhai, Sanmitra, I hope you got chance to watch videos, and then are you on, are we on the same page? Yes, I've been catching up. I've been watching the videos. I'm attending now while I'm traveling to office. But yes, I've been watching the videos too, and I'll attend the day-to-day batches too. Thanks, man. Vishal, Yogesh bhai, how was the training? Do you have any doubt from that training? Anything conflicting you felt के यहाँ पर ऐसा सिखा रहे थे, Microsoft की ट्रेनिंग में वैसे बता दिया? Anything? Do you have in your mind any question? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ ऐसे खास नहीं है सर. भाई कल फर्स्ट डे था, उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिए. ओके, तो वो पहले ही क्लियर हो गए थे. मतलब आपने जो ट्रेनिंग सेशंस, आज के इनका सेशन कुछ अलग ही है. मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड है ऑलमोस्ट. स्टार्टिंग से कुछ मतलब इतना आइडिया नहीं आ रहा है. तो देखते हैं. ओके, सो आई होप ट्रेनिंग सेशन आज का भी अटेंड किया आपने. यस, ये डेडिकेटेड होस्ट और प्राइवेट क्लाउड का एक थोड़ा सा ये था. we'll cover that. We'll come to that. Okay, noted. Okay. Registration, no Vishal, that is not today's work. Registration 15 days पहले ही खत्म हो चुका था ये ट्रेनिंग का, आई थिंक. सो दैट्स ओके, वो अभी नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम जब मुझको कोई ऐसा मिलता है लिंक या वाउचर वगैरह, आई विल शेयर इट विथ यू. तो इस वाली ट्रेनिंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. it has been started already. एक सेशन कल हो चुका है, आज का लास्ट सेशन, एंड these guys will get voucher. I'll share it with you without failing. Next time कुछ आता है ऐसे, so I'll definitely share with you. Yes, but we can register for next session as well, for 7th and 6th, 8th June. For the same link, is it working? Yes, it is working. We can get registered. Yes, we can register there. So Vishal, you can use the same link. Jafar, if you could share the link again in the group. Vishal, yeah, Jafar will share that link. Click on that link and register yourself for the June 7th June. He's saying that is the date. There you have to select, and hopefully you will get a chance to get enrolled into this. And then 23rd and 24th. जो भी चाहिए वो कर सकते हैं. Okay, great. I'll just share. Yes. So let's go to compute topic now. Compute is our service. What all services do we have in compute? Who could tell me before I go and open this? Under compute, anyone who could tell me 5 names which we have under compute category? This is the compute category in front of you. It is just above, right? So could any one of you tell me the 5 services? And I'm not just asking to test your knowledge, guys. Interview question होता है कि कौन-कौन से services use की आपने compute में, network में कौन-कौन से services use की. And if you're claiming that you have worked for 3 years, you should know at least few services. In this virtual machine skill set. Yes, virtual machine skill set. 3 more. Anyone else? Henty, services under compute.
serverless computing. Not sure. Let's see. Riaz, Sumaya, services under compute. Yogesh, Vishal. Availability set. See, guys, Availability set. Meanwhile, Disk. I am not even yes, Irfan, correct. नहीं, disk इसमें नहीं आएगा. We'll see. ठीक है. Guys, yes, disk आ रहा है इसमें. Disk classic वाला इसमें आ रहा है. Perfect. So I'm not even looking at your screen, guys. इतनी देर में at least you should have this practice कि अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो ना, तो quickly पोर्टल पे लॉग इन करके at least ये आंसर दे दो. इतना आंसर. This will help you in your interview. Not every interviewer will ask to share your screen. This is just an exception, इसलिए मैं आज बता रहा था. But there are still many interviews जिसमें screen share नहीं हो रही है आपकी. तो at least ये practice तो रखो that when I'm asking you something, it's very simple. You log into portal. Most of you have access on Azure portal. You can simply go and start reading from here. So which are the services do we have under compute? We have virtual machine scale set, virtual machine classic अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी का ये classic वाला ये है. ठीक है. Availability set, we have read this, we did this. Availability set हम लोगों ने किया, virtual machine हम लोगों ने किया है. ठीक है. Disk we saw. So at least 3-4 तो आप लोगों को इतना easily याद होना चाहिए. ठीक है. बाकी इसमें से कोई आप दो याद रख सकते हो, बोल सकते हो कि ठीक है नहीं काम किया हम लोगों ने. डिस्क पे हर कोई काम करता है. वर्चुअल मशीन स्केल सेट कॉमन चीज है, वी विल लर्न दिस, बट इस पे हर कोई काम करता है. Availability set we have already seen, and virtual machine we are looking at this, but we have already seen that there is something named virtual machine. तो at least इतने तो आप लोगों को. फंक्शन ऐप भी इजी है, ये भी हम लोग करने वाले हैं. फंक्शन ऐप एंड इवन ऐप सर्विस, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से याद होना चाहिए, because someone who's daily working on this portal उसको वैसे ही पता होगा ये नाम. So if you claim that you have worked and if you're not able to take these names, तो आपका claim पकड़ा जाएगा कि okay, you have not really worked here. Okay, so let's start with virtual machine. So I hope by now I do not have to repeat it. Quickly, can anyone tell me from where do we get this information complete? यहाँ से यहाँ तक जितना हम लोगों ने explain किया, or could anyone repeat कि हम लोगों ने क्या explain किया था? और I think till here we discuss, और इसके नीचे भी हम लोगों ने discuss किया था size वगैरह. But can any one person discuss these options? ये क्या है और information कहाँ से मिलती है और based on what aspects पे मिलती है? These are the requirements which are given to us by the client, or we get through the low-level diagram in which what subscription are we supposed to use, which resource group, or if there is existing resource group, or we need to create a new one, and then the region is also mentioned, and if we need to opt in for availability zone or we have to go for availability set, that is also mentioned, along with the operating system, the image, which operating system we will be using, what will be the configuration of the disk and the RAMs and everything. These are the details that we get from the client in the low-level diagram, and then we proceed with these. Okay, region. On what basis did we select region? Did you say? This is provided to us by the client. In which region? But do you know, are you aware that on what basis your architect team decides, or on what basis your client decides? What are the factors do we consider while selecting region? Yes. Now, in this case, the architecture team, they see what is the client required, from which country is the client requesting for the this Azure service. So they go for the nearest available region, so that there is low latency. Right. So latency is one. Anyone else could give me the another reason or another benchmark? Why do we select, on what basis do we select region? Latency is one thing which he explained. User base, cost, feature. Feature is another thing. Compliances. Compliances. Correct. Right. Okay.
मुझे फीचर वाला पार्ट नहीं समझा। फीचर एज इन जस्ट अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट, ये दो तो है हमारे पास में। अवेलेबिलिटी सेट तो हर रीजन में है, अवेलेबिलिटी जोन कुछ रीजन्स में है, कुछ रीजन में नहीं है। सो दैट इज वन फीचर। ऐसे कई फीचर्स है जो अब हम आगे जाके जब हम सर्विसेज देखेंगे तब पता चलेगा कि ये फीचर, छोटा फीचर इसमें है। जैसे रेप्लिकेशन, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं मैं कि रेप्लिकेशन उस रीजन में नहीं है, इस रीजन में है, इस तरह से। ओके, ठीक है। And I hope everyone is clear with this, what is availability zone and what is availability set. Anyone has any doubt in this one? No. No. Okay. Image, is it clear that ये images क्या होते हैं? इसमें I told you guys that I can upload my own image, वो सब भी हम कर सकते हैं। Is that clear to everyone? Yes. यूजर नेम पासवर्ड्स वेरी बेसिक थिंग, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। वो यूजर नेम और पासवर्ड है जिससे आप अपनी मशीन पे लॉगिन करने वाले हो फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी वो बन जाएगी मशीन तब आप लॉगिन करोगे, ठीक है। सो दैट इज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। I think we stopped there, so we'll start from here now. That which are the ports, public inbound ports? What do you understand by this? This is the definition of public inbound ports. So could someone read and explain this, whatever their understanding is? Could one of you read this and explain this to the team? Now, what is the public inbound port? Yes, guys, anyone, please. This is to get the access to the virtual machine. If you select the none, nobody will have the access to that particular virtual machine. And if we go for allow selected ports, then we will have to select which port the inbound traffic will allow, either RDP or HTTP or HTTPS. Through that port, anyone can access the virtual machine. So these are defining the ports, the inbound traffic, the public inbound ports. Correct, Irfan, thank you. Right, so it is basic that what is none. If I select none, किसी तरह का कोई communication नहीं होगा इस machine पे, right? First thing, let's understand this heading. What does it say? It says public. Public का क्या मतलब हुआ? In this case, what do you understand by public? इस word का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? इस context में इस public का क्या मतलब हुआ? Who could explain that? Accessible via internet. Right. Which means it's on public IP address. प्राइवेट आईपी एड्रेस में होगा तो उसको पब्लिक में हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। whichever machine is there on the public IP address, हम उस मशीन की बात कर रहे हैं। या किसी भी तरह से पब्लिकली एक्सपोज्ड है मशीन, इट इज अ मशीन और स्टोरेज और ऐप और एनीथिंग, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ पोर्ट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यस्टरडे इन लास्ट सेशन, सॉरी, कि पोर्ट्स क्या होता है। एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट, यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? पोर्ट्स port number, I know I do not have, I haven't sent them yet, but वो Google पे वैसे ही available है. If anyone wants, you can go and check for what are the famous ports. और port काफी है, 65,000 से भी ज्यादा ports available है, ठीक है, but we do not need to remember all of them. So famous ports you'll have to or most frequently ports. This is taking to some other ports. Yes, guys, anyone who did not understand ports? All of you understood ports? Yes, yes, no, maybe. Anyone who did not understand ports? What are the most common ports we use in Azure, which we need to Common study? ports you will get here. Okay.
Not only in Azure, you will have to remember all of these. थोड़ा सा इनको याद कर लो, पूछते हैं इसमें से Azure में कौन से आने वाले हैं यूज, विल सी दैट. हाँ ये काफी सही है. इसमें FTP बहुत कॉमन पोर्ट है. SSH we use to take remote of a Linux machine. Telnet we use it very frequently. Simple mail transport SMTP we use it very frequently. Time protocol है. Domain DNS का एक पोर्ट है. Then TFTP है. Finger I have not heard much. HTTP and HTTPS भी एक होता है. ठीक है, here it is HTTPS 443. तो I'll send this one. ये ठीक है, काफी इसमें जो है चीजें कवर है. So I'll share this one. But anyone who did not understand ports, so I think all of you have got it except one. I've got one message that he wants me to repeat the ports. So why don't one of you guys explain what are the ports with examples, so it will be a revision for all of them. Who wants to repeat? Yogesh, Jafar, Juhi, could one of you explain what are ports? Basically, ports allows the connection from any other IP address to this particular virtual machine. If we do not select any of the ports, we will not be able to connect. Okay, are these physical or virtual? What are these ports? The one which we are looking at, these one, are these physical ports or virtual? Virtual. Right. So it's nothing. Ports is just a way to to access your system or your resource. It could be anything, not necessary it's a virtual machine all the time. कुछ और भी हो सकता है, but किस तरह से access करना है, इसे ये physical ports भी हमारे पास है. USB को अगर आपकी मशीन को access करना है या मशीन को USB को access करना है, then we have USB ports. Internet को access करना है, then we have LAN port. Right? If we want to use power, we have this power port, serial port. ठीक है, these are the ports. So पोर्ट का क्या मतलब होता है कि यहां से आपकी मशीन या आपका रिसोर्स जो है वो एक्सेसिबल है. इज इट क्लियर? डिड यू गेट इट? Yes. Okay, so these are the ports we were talking about. Okay, so here we'll have to allow some specific ports. अब ports का कैसे होता है? See, public ports we are talking about only, guys. ठीक है. So look at this one. इस image को सामने रखते हैं हम लोग, जो ports वाला image है, और this will come to you guys via practice के कौन सा port किस में काम होने वाला है. But as of now I'll show it to you. HTTP का मतलब होता है और let's do one thing. You guys can make a note of this. ये चारों का जो है आप एक नोट बना लो. I am telling you कि कौन सा किसके लिए यूज होता है. You make a note of this, so I won't have to explain it several times, and I'll ask you these questions also. जहां पर भी आपको नोट बनाना है आप बना लो. HTTP, it is for website access. So if this server of mine, it is going to host a website, so I will have to have this HTTP port. Without HTTP मेरा वेबसाइट उस सर्वर पे तो चलेगा, लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. Is it clear to everyone? Are you making notes, guys? Yes. Okay, so HTTP port 80, it is for a website. If this is not allowed, you will not be able to access your website. Clear? Yes. And how do we access a website normally? How do we access a browser website? What is the tool do we use? Go to the domain. Sorry? No, definitely not domain. What is the tool's name which we use to access any website? Browser. Yes, browser. So when you use a browser automatically knows that you're using port 80. So you don't have to type port 80 in front of it. Otherwise, कोई ऐसे सर्विस है जो मल्टीपल पोर्ट से एक्सेस की जा सकती है और उसको आपको किसी स्पेसिफिक
पोर्ट से एक्सेस करना है, सो यू हैव टू टाइप दैट पोर्ट नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। एग्जांपल के लिए सॉरी, अगर मैं अपनी वेबसाइट ऐसे बनाता हूँ टी सॉफ्ट, ठीक है, एंड मैं उसको सिर्फ पोर्ट 5000 पे चलाना चाहता हूँ, सो ऑल ऑफ यू विल हैव टू टाइप दिस एड्रेस लाइक दिस। ये कोलन से लेकर 5000 ये आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। सॉरी, यस, सो you'll have to type like this। इसका क्या मतलब हुआ, that you are accessing this website on port 5000 and if you're not doing anything, इसका मतलब है कि आप बेसिकली पोर्ट 80 पे जा रहे हो डायरेक्टली। Is it clear guys? Are you guys getting it? Yes. और ये HTTP अगर हम यूज करते हैं, let me show it to you। If we are using HTTP, then which port are we using? 80. Port 80. Port 80। इसका मतलब है basic website। And the same website if we have to use using a secure website। Secure website मतलब उस पर कोई सर्टिफिकेट्स लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकिंग के साइट्स जो है वो सिक्योर होते हैं, सिक्योर वेबसाइट्स होते हैं। तो सिक्योर वेबसाइट्स जो है, इफ यू सी यहाँ पर कोई जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज करता है। यहाँ पर इट सेज योर कनेक्शन इज सिक्योर बिकॉज इट इज यूजिंग सम सर्टिफिकेट। तो सिक्योर वेबसाइट जो है वो कौन सा पोर्ट यूज करता है? 443. Port 443। Now if you look at this one, this is my secure website HTTPS। How can I figure it out? जहां पर HTTPS लग गया इसका मतलब हो गया सिक्योर वेबसाइट, और HTTP लग गया मतलब बेसिक वेबसाइट आपकी। बैंकिंग के कभी भी नहीं हो गए बेसिक वेबसाइट। नाउ सी आई टाइप्ड HTTP बट इसने अपने आप मुझको रिडायरेक्ट कर लिया HTTPS, क्योंकि बैंकिंग वाले कभी आपको ये नहीं देंगे, डायरेक्टली सिक्योर वेबसाइट ही देंगे। Almost every website of the bank will be secure website। ठीक है, so if your server or your application is planning to host a secure website and if you uncheck this box, it will not work। आपकी वेबसाइट चलेगी लोकली उस सर्वर पे चलेगी बट कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस सर्वर लेवल पे आपने HTTPS को ब्लॉक कर रखा है। If you guys remember, I gave you an example, वो जो बंगलो का एग्जाम्पल दिया था मैंने। Let me open Paint again। So let's say if this is your bungalow, so here is the main gate from where you can enter and your vehicles can enter, ठीक है, and here's a small gate जो आपने आपके housekeeping staff के लिए रखा, और इतना छोटा है कि टू व्हीलर आती है। So even if you want your vehicle to your car to enter from instead of this from here, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बना है स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं बना, ये बना ही है सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए। एंड इफ दिस हाउसकीपिंग स्टाफ इफ दे वांट टू एंटर फ्रॉम हियर, तो यहाँ के सिक्योरिटी उसको ब्लॉक कर देगी कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज दिस पोर्ट। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज वी हैव केप्ट अ पोर्ट 80 ओपन, दैट डज नॉट मीन कि HTTPS का ट्रैफिक भी वहां से चला जाएगा। उसके लिए हमको स्पेसिफिक पोर्ट एक ओपन करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? कि हर ट्रैफिक के लिए एक पोर्ट जो है डेडिकेटेड है। सो इफ आई वांट माय वर्चुअल मशीन और माय एप्लीकेशन टू बी यूज्ड ओवर द ब्राउजर and only for HTTPS, I will have to open this, and if I want only for HTTP, I'll have to open this, and if I want के चलो मेरे पास सिक्योर साइट भी है और बेसिक साइट भी, जिसको जो यूज करना है करे, I'll have to open both of this। Same thing is SSH, कॉन्सेप्ट सेम है, और SSH यूज होता है किसी लिनक्स सर्वर का रिमोट लेने के लिए। किसी लिनक्स सर्वर पे अगर मुझको लॉगिन करना है, so to take remote I will require SSH protocol। If my SSH protocol is not there, or if my SSH port is not open, मैं वो लिनक्स मशीन बना तो लूंगा लेकिन उसके ऊपर मैं कोई प्रैक्टिस या लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा। फॉरगेट कोई प्रैक्टिस वगैरह तो सेकेंडरी है, मैं लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा उस पर। RDP is for Microsoft and SSH is for Linux. Right, RDP is for Windows। I will not say Microsoft। आजकल Microsoft के भी आपके जो है हाँ इस तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें RDP नहीं चलेगा, OS आ रहे हैं जिसमें RDP नहीं चलेगा और सिर्फ SSH चलेगा। तो जो आपका लिनक्स टाइप का सिस्टम होगा ना, उसको आप SSH पोर्ट से ये करते हो।
एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब तक जितना भी हुआ उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है? Yes guys, anyone who did not understand anything or who want me to repeat? या थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा नहीं आया है? Okay, so this is my Linux machine. If I turn it on, ठीक है, मैंने मशीन तो ऑन कर लिया, अब इस पे जाके मुझको कुछ चेंजेस करना है. How will I do it? तो इसका रिमोट लेने के लिए मुझको सबसे पहले चाहिए होगा कि मशीन ऑन हो. So I'm turning on the machine. Once the machine is on, I will have an IP address to connect. As of now, we are dealing with public IPs, guys. ठीक है, प्राइवेट IPs में हम बाद में देखेंगे कि प्राइवेटली कैसे कनेक्ट किया जाता है. That we'll see later. As of now, we are just dealing with the public IPs for practice purposes. So once I have my public IP up and running with me, when my machine is up and running, and I have my public IP, I will have to take remote or I'll have to get connected to this machine, so I can work on this machine. तो मैं इसमें अपना वेबसाइट को जो है ये कर सकता हूँ, वो इसको होस्ट कर सकता हूँ, कोई चेंजेस कर सकता हूँ. ठीक है. So let this machine turn on first. Here I have the public IP. Now if I type this public IP here in browser, is it going to work, guys? Does it mean this machine No. is off? No, And the port is not open. now if I no, port is open. Okay. Now if I type here just 22, will it work? No. So फायरवॉल ऑन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. इससे हम ये सीख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज यू टाइप एवरी पोर्ट यहाँ से एक्सेसिबल नहीं हो सकता है. Correct. यहाँ से सिर्फ उस सर्वर की वेबसाइट एक्सेस हो सकती है. हाँ, वो वेबसाइट किसी और पोर्ट पे होगी तो दैट इज फाइन. नाउ व्हाट आई एम, इस सर्वर पे कोई वेबसाइट है नहीं इसलिए एरर दे रहा है. What I'm trying to do here is I'm trying to access this computer. I want to access this computer. So to access this computer, to take remote, there's a specific tool called putty or putty. इसका pronunciation आप लोग देख लेना. PUTTY. That is the tool we have. So using this tool, here it is. You can take any machine's port, SSH connection. Here it is, SSH port number 22. This is my machine's IP address. I click on open. I accept this certificate. And now it is asking for a user ID and password. And I'm logged into this machine. DHCP client server has UDP port 68 and 68 respectively. However, it is showing 546 and 547. Is it related to this session, this question, Vinayak? Do we have Vinayak here? Okay, I'll address that later then. Yes guys, so दो चीजें इससे क्या समझ में आई कि आप हर कोई पोर्ट हर एक टूल पे यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. एंड दैट पोर्ट इट हैज अ स्पेसिफिक टूल टू बी यूज. तो अगर आप लोगों को किसी लिनक्स मशीन का ये करना है, रिमोट लेना है, SSH लेना है, तो इसका टूल है पुटी और पट्टी, व्हाटएवर यू कॉल इट. इसमें आप लोगों को IP एड्रेस ये करना है, यूजर ID और पासवर्ड ये करना है, एंटर करना है, एंड देन यू हैव टू टेक रिमोट. इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? 3 पोर्ट्स, इज इट क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? HTTP, HTTPS and SSH. Yes guys, किसी को कोई डाउट? No, bhai.
Yes, Irfan, there are more ways to connect to a Linux machine other than putty, but similarly वो भी tool ही होगे किसी न किसी तरह के. Okay, so this is about to finish, guys. I will stop it and start immediately without any break. Same link.